So we are moving to the final unit of our syllabus, that is regarding planning in India. इसके अंदर mainly comes rural urban planning का छोटा छोटा आता है, लेकिन सबसे important है रूरल मीन्स इसमें एग्रीकल्चर वो सेक्टरल वाइज है, फिर पंचायत राज, ये सब दैट कम्स अंडर रूरल प्लानिंग में आता है. एंड द इम्पोर्टेंट पोर्शन is about the planning commission, role of planning commission and the 5-year plans. Role of planning commission is mainly the preparation of the 5-year plans. So within the role, this 5-year plans also comes. So today we are discussing about these two parts. One is the role of planning commission. Another one is the 5-year plans. We have 12 5-year plans. In between, there are certain gaps which is being filled by annual plans and rolling plans. When we consider the 5-year plans, that is the major role done by the planning commission. We have 12 5-year plans starting from 1951 and ended on 2017. खत्म हो गया है. Now we don't have 5-year plans. We have annual plans which is being made by NITI Aayog right now. Not purely the annual plan also. It's part of the other plans. The NITI Aayog is managing the long-term, short-term and medium-term plans of India right now. And the planning commission also wind up on 2014 में ये खत्म हो गया है. Planning commission, it has been changed to NITI Aayog. So something, a small area we can discuss on the NITI Aayog as well. So the Planning Commission of India, which was constituted in India during 15th March 1950. So we know we got independence on 1947. It's today 76 years back actually. We got independence 15th August 1947. So after that we are having a lot of problems, especially uniting India, and other problem is the economy. We don't have the enough potential. We have the potential, but we are in a situation that we are not able to utilize it. And on the other side, poverty was there, food security is not there, so we are facing a lot of problems. For managing all this, the government of India made a resolution on 1950. That is the Constitution of Planning Commission in India. The main aim of this Planning Commission was to promote rapid rise in the standard of living of the people. इसके लिए क्या कर सकता है? Mainly to utilize our resources, to increase the productivity of that resources and generate employment. ये तीनों करने से we have a chance to increase the economic level of the country. Then only we can sustain. ऐसा condition था. So the Planning Commission has given a bigger task, and for this 70 years they have done a great contribution to the development of our economy. It was like that. It was arranged. We will go to the structure of the Planning Commission. So it was mainly chaired by the Indian Prime Minister. So the chairman of the Planning Commission is the Prime Minister. Sorry, was chaired by the Indian Prime Minister. So first Prime Minister, as we know, Jawaharlal Nehru is the first chairman of Indian Planning
कमीशन। ये भी पूछ सकता है, हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। So later on 2014, this planning commission was replaced by Niti Aayog. That is during the time of NDA के time में they have changed because planning commission ऐसा था upper to lower था, ऊपर decision लेगा that will move to the lower path। अभी क्या है, नीति आयोग directly opposite करता है। The decision mainly is being taken by the lower or the bottom layer and is moving to the upper layer। So ऐसा करने के लिए they have made the Niti Aayog। So what is the structure of this planning commission? As I said, the chairman of planning commission is the Prime Minister of India, presided over the meetings. Many meetings has been presided by Prime Minister था, but he can't totally उसके अंडर नहीं ले पाएगा। So just like अभी गवर्नर है यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन who is doing the work of the university? That is vice chancellor। Just like that, for planning commission there will be full-time functional head है, he is the deputy chairman। He is known as the deputy chairman है full time function के लिए। तो इसका responsibility क्या है? Formulation and submission of draft 5-year plan। So that is one of the important function of the planning commission। Then he was appointed by the central cabinet for a fixed tenure and he has cabinet rank दिया था। He can attend the cabinet but vote तो नहीं है, that will be done by the ministers। So he has cabinet power भी था। Then the part-time members इसके अंदर था, some central ministers होगा। Then ex officio members, that is mainly financial minister and the planning minister। ये दोनों ex continuously permanent जैसा full time members है। Part-time members some central ministers था। इसके अलावा we have lot of senior officers, they were controlling multiple division। इसके अंदर अभी प्लानिंग बोलने से बहुत सेक्टर्स है, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, साइंस, फिनांस, तो ऐसा मल्टीपल सेक्टर्स है। ये सबको कंट्रोल के लिए इंडिविजुअल हेड को दे रहा था, दे आर नोन एज द सीनियर ऑफिसर्स। तो ईच सेक्टर और ईच डिवीजन को ये लोग कंट्रोल कर रहा था, पूरा कोऑर्डिनेशन। तो पहले सबसे ऊपर चेयरमैन, इसके नीचे डेप्यूटी chairman, then ex officio members, then the part-time members, then the senior officers who were controlling the or head of the multiple divisions। ऐसा structure था planning commission के लिए। And they have their roles। The planning commission have the biggest role, especially for planning the economy of the country। So these are some of the main roles of the planning commission। One is the assessment of material, capital and human resource of the country, including technical persons and formulation of proposal for augmenting such of these resources are found to be deficient। ये क्या है? They will estimate the resources of the कंट्री का रिसोर्सेस, मटेरियल कितना है, कैपिटल कितना है, ह्यूमन रिसोर्स हमारे लिए कितना है, ये सब कैलकुलेट करेगा। एंड दे विल चेक वेदर देयर इज एनी डेफिसिट। तो पहले देखने से सब एरिया में अदर देन द ह्यूमन रिसोर्स देयर आर लॉट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बट दे आर नॉट स्किल्ड, दैट मच स्किल नहीं था, बिकॉज जस्ट बिफोर दैट इट वाज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स। तो उसी टाइम में प्रॉब्लम था। तो दे आर लुकिंग आफ्टर दिस शॉर्टेजेस, कौन सी एरिया पे कौन सी रिसोर्सेस पे अभी हमारे लिए डेफिसिट है। सो दैट वाज द प्राइमरी रोल ऑफ द प्लानिंग कमीशन।
Then based on this they will formulate plan for most effective and balanced utilization of country's resource. तो पहले असेस करेगा, उसके बाद क्या करेगा, फॉर्मुलेट करेगा. फॉर्मुलेट व्हाट फॉर्मुलेट करेगा, दे विल फॉर्मुलेट द प्लान्स, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान, ये लोग प्लान करता है. देन definition of stages sorry definition of stages in which the plan should be carried out on determination of priorities and allocation of resources for completion of each stage. So it is like that. For dividing, हम बोला है short term है, medium term है, long term plan है. So ये कौन सी प्लान, तो कौन सी रीजन में ये शॉर्ट टाइम करना है, कौन से रीजन में मीडियम टाइम करना है, कौन से रीजन में लॉन्ग टाइम प्लान करना है, ये सब वो लोग कैलकुलेट करेगा, वो लोग डिफाइन करेगा. शॉर्ट टाइम के लिए ये करेगा, नहीं ये तो अभी ये इसमें तो नहीं होगा. सो इसके तो फेज करेगा, स्टेजेस सेपरेट करेगा, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज डेवलपमेंट. फर्स्ट फेज एग्रीकल्चर, फर्स्ट फेज डेवलपमेंट करेगा, सेकंड फेज डेवलपमेंट करेगा, थर्ड फेज, ऐसा भी ये लोग ही डिसाइड करता था. देन determination of the nature of the machinery necessary for the implementation of the plan. तो प्लान डिसाइड किया है, पहले रिसोर्स तो कैलकुलेट कर दिया कितना है, उसके बेस प्लान बना दिया है, उसके बाद इसका कितना फेज चाहिए, कितना कितना स्टेजेस चाहिए, कौन सी तरह का प्लानिंग इसके ऊपर चाहिए, ये सब डिसाइड करेगा. देन they will decide about the nature of the machinery, कौन सी टाइप का मिशनरी इसके ऊपर ये प्लान इंप्लीमेंट करने के लिए इंप्लीमेंट करना है, वो भी they will decide. Then appraisal from time to time of the progress of the achievement. तो प्लान तो बना दिया, उसके बाद सब मिशनरी भी डिसाइड कर दिया, फिर क्या करना है, they will look after the development, कितना प्रोग्रेस हुआ है वो प्लानिंग में, वो भी इन लोगों का रोल है. देन public cooperation in national development. अभी watershed management, when we are, it's a part of the planning है, watershed management. इसमें क्या होगा, people's participation होगा. तो क्या है, involving the local people in the developmental activities. So planning commission has a role to cooperate the local population to that particular plan. So it's a part of public cooperation in national development. Then hill area development programs. So hill area is like that. There are certain areas that is weaker areas है, नहीं तो underdeveloped area है. इसी area पे like hilly area, desert region, drought prone areas, flood prone areas, ऐसा बहुत कुछ problem zones है. तो ऐसे एरिया में भी डेवलपमेंट इन लोगों का काम है. देन पर्सपेक्टिव प्लानिंग, दैट इज मेनली लॉन्ग टर्म, फॉर 5 years, 5 year प्लान बोलता है, उसके बाद 10 years, तो 15 years, 30 years. तो ऐसा पर्सपेक्टिव क्या होगा, कैसे करने से इतना साल के अंदर ये चेंज लेके आ सकता है, इतना परसेंटेज तो ग्रोथ कर सकता है, 8% ग्रोथ, 10% ग्रोथ, ऐसा. तो इसके लिए तो क्या करना है, कौन सी एरिया पे डेवलप करना है, एग्रीकल्चर से, वेदर इट इज बी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, वेदर इट इज इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो ऐसा कौन से सेक्टर में काम करने से इतना परसेंटेज डेवलपमेंट इंडिया को ले सकता है, जीडीपी इतना परसेंट कैसे ग्रो कर सकता है. सो ऑल दिस कम्स अंडर द पर्सपेक्टिव प्लान. सो दिस इज आल्सो द रोल ऑफ प्लानिंग. देन डायरेक्टरेट ऑफ मैन पावर, अभी मिशनरी को दिया है, उसके साथ क्या और देना है, मैन पावर भी देना है, स्किल्ड लेबर्स. तो क्या कौन सी सर्विस चाहिए इस प्लानिंग के लिए, कौन सी सर्विस चाहिए. अभी एक कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डैम, तो डैम बनाना है, तो कितना ये है सर्विस. तो इसके लिए तो कौन सी तरह का पॉपुलेशन को देना, विच काइंड ऑफ स्किल दे रिक्वायर्स. तो ऐसा स्किल, तो हाउ मेनी पर्सन्स रिक्वायर्ड, हाउ मेनी वर्कर्स रिक्वायर्स, ये सब कैलकुलेट करके उसी एरिया पे दे विल प्रोवाइड दी मैन पावर एस्पेक्ट. तो देयर प्राइमरी एम तो सेटिस्फाई कर सकता है, क्योंकि
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है प्राइमरी काम। इसके लिए क्या करेगा, दे विल यू कैन सी हियर ऐसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा करना है। इसके लिए तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इसके लिए तो क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। प्लानिंग करने से क्या मिलता है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी मिलता है। ऑफरिंग एम्प्लॉयमेंट इज आल्सो देयर ड्यूटी है। एम्प्लॉयमेंट देने से इकोनॉमी मिलता है, मनी मिलता है, तो there will be eradication of poverty as well. So these are the major role of the planning commission. But when we divide, there is two division for the planning commission. ये main काम ये सब है, लेकिन अभी बोलने में प्लानिंग कमीशन के लिए दो डिविजन है। वन इज द जनरल डिविजन एंड सेकंड वन इज द सब्जेक्ट डिविजन। तो जनरल डिविजन में मेन है कि आर कंसर्न विद द एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। कंट्री में जितना भी इकोनॉमी है पूरा मिला के एक साथ करना है। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, डेवलपमेंट पॉलिसी डिविजन, financial resource division, then international economic division, labor employment and manpower division, then perspective planning division, plan coordination division, project appraisal and management division, then socio-economic research unit, state plan division including multi-level planning, board area, तो ऐसा multiple planning division होगा, then statistics and survey division and monitoring cell। ये general to the whole nation। तो इसके लिए तो क्या कर सकता है। Second one is the subject division concerning about a specified field of the development। तो ये सब statistical division हो गया, monitoring division हो गया, perspective और planning सब division ऐसा generalized है, लेकिन अभी each sector के लिए देना है। For that they have subject divisions as well। इसके अंदर आता है agriculture division, backward class region, then communication and information division, education division, environment and forest, health and family welfare, housing, urban development and water supply, then industry and mineral division, irrigation and command area division। So command area watershed I said it's a part of command area development program है। Then power and energy division, rural development, science and technology division, social welfare and nutrition division, then transport division, village and small industry division, then western Ghats secretariat। So ऐसा multiple area में एग्रीकल्चर आता है, एजुकेशन आता है, हेल्थ आता है, एनवायरनमेंट आता है, इंडस्ट्री आता है, इरिगेशन आता है, तो मल्टीपल सेक्टर में ऐसे वाला डिवीजन को बोलता है सब्जेक्ट डिवीजन। जो पूरा देश को एक साथ देखता है, स्टैटिस्टिक उसका तो स्टैटिस्टिक्स, फिनेंस, ये सब देखने के लिए दैट इज द जनरल डिवीजन। सो दीज आर द मेजर रोल्स एंड बेस्ड ऑन दीज roles they have been divided into two। one is the general division, another one is a subject division। तो subject division के अंदर ऐसा division भी आता है। so these are the major role of the planning commission। इसमें mainly ये याद रखना है कौन सी एरिया पे ये लोग काम करता है। then we have the 5-year plans। so 5-year plans very important है। इसमें से ऐसा पूछा है tell about the third 5-year plan, tell about the fourth 5-year plan। वो 2 मार्क का नहीं तो 3 मार्क का 5 मार्क का ऐसा पूछ सकता है। discuss otherwise for essay write about the 5-year plans of India, ये भी पूछ सकता है। so you have to understand that the first 5-year plan started from 1951 है। तो 1951 to 5-year बोलने से 1956 फर्स्ट 5-year plan। ऐसा कंटिन्यूअस 5-year plan होता है, लेकिन बीच में there are certain interruptions happen। पॉलिटिकल हो, नहीं तो वार हो, नहीं तो अनसक्सेसफुल प्लान्स हो, ये सब के वजह से there are lot of
disturbance happened, continuity में disturbance हुआ है this 5-year plan का. So ऐसा 5 ऐड करके मत जाओ, बीच में जो ब्रेक है वो याद रखना है. इफ यू नो द बिटवीन कौन सी ईयर्स में गैप है वो याद रखने हैं, से यू कैन डायरेक्टली टेल द प्लान तो लिख सकते हैं, खुद से लिख सकता है. आई विल टेल विच आर दे बिटवीन. वो तीन ऐसा कुछ गैप आता है 66 to 69 70 ऐसा, वो याद रखना है, वो डेट याद रखना है. वो याद रखने से पूरा 5-year प्लान का डेट यू कैन अंडरस्टैंड. सो इट स्टार्ट फ्रॉम 1951 and ends at 2017. So in between we have tall 5-year plans. So this is the numbers 1951 to 2017. So the first 5-year plan, which is launched on 1951 to 56. So 51, 52, 53, 54, 55 and 56 में एक कदम हो गया है. So 5-year under the leadership of the first Prime Minister, that is Jawaharlal Nehru. It's based on Harrod-Domar मॉडल. ऐसा बोलता है, ऐसा बहुत कुछ मॉडल्स, आपको ये सब याद रखने की जरूरी नहीं है. दिस इज मेनली फोकसिंग ऑन, ये याद रखना है, दैट इज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. तो फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, फर्स्ट 5-year प्लान इज फोकसिंग ऑन विच सेक्टर. सो इट इज फोकसिंग ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर. द प्लान वाज सक्सेसफुल है, अचीव्ड अ ग्रोथ ऑफ 3.6%. तो ये याद रखने की जरूरी नहीं है, बट इट इज अ सक्सेसफुल प्लान, ये याद रखना है. बिकॉज उसी टाइम में वी वर हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम. सो डेवलपमेंट दैट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड था. सो ग्रोथ रेट 1951 to 56, it was a successful plan. So at the end we have 5 IITs in our country, Indian Institute of Technology. ऐसा 5 बनाने के लिए भी we have able to do that. That is an achievement. So first 5-year plan is mainly for the agriculture development of the country, and they are very well succeeded on the same. Started from 1951 to 56. Then the second 5-year plan. So 56 से शुरू हो गया है 5-year, that is 61, 57, 58, 59, 60, 61. ये भी we know till 1964 Jawaharlal Nehru was there. So this was also led by the Jawaharlal Nehru government था. It is another model है, they have been followed, that is PC Mahalanobis model है, इसका बोलता है. And this second 5-year plan is mainly focusing on the industrial sector, industrial development के लिए. तो फर्स्ट 5-year plan agriculture के लिए दिया था, second is mainly for the industrial development. बट इसका क्या हो गया, इसका टारगेट था 4.5%, बट थोड़ा इसमें से कम हो गया है, 4.27% ग्रोथ ही अचीव किया था. सो इट इज नॉट एज, वी कांट से इट इज नॉट अ सक्सेस, बिकॉज at that time 4.27% is also very high achievement, but the target was 4.5% growth tha. It was not able to done during that time. इसलिए इसके वजह से there were lot of criticism for the second 5-year plan. Then the third 5-year plan 1961 to 1966. तो थर्ड 5-year प्लान तक सब ठीक है. 51 to 5 years, 56, then 56 to 5 years, 61, then 61 to 66 5-year plan. This is also started under the leadership of Jawaharlal Nehru था. तो 60, so ये
प्लान भी डेवलप किया है जवाहरलाल नेहरू के सेम। दिस प्लान इज आल्सो नोन एज गाडगिल योजना बिकॉज द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन उसी टाइम में डॉक्टर DR गाडगिल था। यहाँ भी they were mainly focused on the economic independence। इसके लिए तो क्या किया है, स्ट्रेस हैज गिवन टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को ये ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए मेन चीज है फूड सिक्योरिटी, तो एग्रीकल्चर में ज्यादा स्ट्रेस दिया है। एंड द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट शुड बी, वो टारगेट किया है इसका इम्प्रूवमेंट, व्हीट प्रोडक्शन का इम्प्रूवमेंट में टारगेट दिया है। बट ड्यूरिंग दिस टाइम वी हैव फेस्ड wars, and 2 wars में we have encountered. One is Sino-Indian War 1962 में, then Indo-Pakistani War in 1965। so 2 वार हुआ है। Sino-Indian War में इंडिया का बहुत लॉस हो गया है, देन इंडो पाकिस्तान वार भी सेम ही हो गया है। सो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक शिफ्ट हो गया है टू द डिफेंस इंडस्ट्री। तो जो देना था, स्ट्रेस देना था एग्रीकल्चर में, दैट वी हैव नॉट एबल टू अचीव। द ग्रोथ टारगेट वाज 5.6% था, बट हैज बीन ओनली अचीव्ड 2.4% ही अचीव कर पाया बिकॉज ऑफ दीज 2 वार। तो थर्ड 5-year प्लान is not a successful one, not because of the plan problem. It is mainly because of the unexpected wars that happened in 1961, 62 and 1965 Pakistan। Sino-Indian War 1961-62 में है, and Sino means China, China India war है 1961-62 में, Indo Pakistan war है 1965 में। So that is about the third 5-year plan। So इसमें कौन सी एरिया पे, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए, and stress has been given to agriculture। So first one is for agriculture, second one is for industry, third one is for agriculture again, then the fourth 5-year plan। But if you look the fourth 5-year plan, between that there is a break, plan holiday दिया था। So you want to remember these dates, 1966 to 1969। तो 5-year प्लान उसी टाइम में नहीं है, 66 to 60 टाइम, तो ब्रेक लेना है उसी टाइम में। प्लान हॉलीडे क्या हुआ था, ड्यू टू द फेलियर ऑफ प्रीवियस प्लान, गवर्नमेंट ड्रॉप किया प्लान को, क्योंकि वार हुआ है तो 5-year प्लान करना तो थोड़ा मुश्किल था। So there was a plan break happened during 1966 and 1969, 3 year खत्म। Then we have the fourth 5-year plan। तो 69 से शुरू होता है, 69 to 74, लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। तो वी नो नेहरू एरा 1964 में खत्म हो गया है, इसके बाद इंदिरा गांधी आ गया है 1969 to 74 में। The main objectives of this plan is the growth with sustainability and self-reliance। इसी टाइम में they have bring the green revolution। So again the stress goes to agriculture। तो first, second industry हो गया, then third and fourth one we have given stress to the agriculture sector। But we have in 1971 Indo-Pak war again। इसी टाइम में बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए हम लोग कोशिश किया है। Along with that we have family planning program से भी implement किया है, but the plan failed। Growth rate is only 3.3%, target 5.7%। इसके भी कारण है कि we have again faced Indo-Pakistan war, उसी टाइम में we want to face। इसके वजह से the fourth 5-year plan is also a failure। Then the fifth 5-year plan। Fifth 5-year plan again 74, ये याद रखना है, इसमें एक ईयर कम है, 74 to 78 तक 4 years है, क्योंकि इन बिटवीन इसको तो टर्मिनेट करना पड़ा, क्योंकि बीच में
दूसरा गवर्नमेंट आ गया है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट बीच में फॉल हो गया है, उसके बाद एक दूसरा गवर्नमेंट आ गया है। फोकस ऑन गरीबी हटाओ, देन एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन एंड डिफेंस। तो इसमें फोकस बहुत जगह पे दिया, मेनली द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, साथ में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सो स्ट्रेस इज अगेन गोइंग टू the agriculture production. Along with that, they have given importance to the defense, क्योंकि we have already faced lot of war, so we are expecting wars on the future as well. 61, 62 में, 65 में, 71, so ऐसा बहुत कुछ war we have faced. So some focus is given to the defense area. Again, the agriculture productivity में we have given. So that time is the peak time, one of the peak time of the green revolution है, 74 to 78. Then Electricity Supply Act was amended in 1974. A 20-point program was launched in 1975. Again, this plan was successful. तो इसके बीच में कुछ वार ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए ये तो सक्सेसफुल था। टारगेट एट 4.4 था एंड ग्रोथ अचीव्ड इज 4.8। बट क्या हो गया, देयर वाज चेंज इन द गवर्नमेंट में चेंज हुआ है, एंड क्या हो गया, 1978 में न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गया है, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। सो दे वर नॉट फेवरिंग द 5-year प्लान, दे वर फॉर द शॉर्ट टर्म प्लान के लिए वो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। दैट प्लान्स वी वर नोइंग एज रोलिंग प्लान। दे हैव ब्रिंग द रोलिंग प्लान, दैट इज फ्रॉम 1978। तो 78 to 1980 चलित हो गया है, 1980 तक 3 years तो रोलिंग प्लान आ गया है। बोलने में 78, 79 and 80, ये 3 years में they have bring the rolling plan in India. Then the 5th 5-year plan, 6th 5-year plan, 5th हो गया, then the 6th 5-year plan. तो 6th 5-year plan started from 1980s to 1985. क्या हो गया, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट अगेन फॉल, उन लोगों को भी ज्यादा आगे जाने के लिए टाइम नहीं मिला है, तो गवर्नमेंट फॉल एंड अगेन इंदिरा गांधी वाज elected as the Prime Minister of India. So Indira Gandhi again brought back the 5-year plan, that is the 6th 5-year plan, which was during 1980s to 85 under the leadership of Indira Gandhi government. So इसी टाइम में the objective was about the economic liberalization by eradication of poverty and achieving technological self-reliance. तो यहाँ क्या है, economic liberalization हो गया है poverty हटाने के लिए। So इसी टाइम में दूसरा कुछ चीज भी लेके आया है, वन इज द इन्वेस्टमेंट योजना, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया है। देन इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज एंड ट्रांस टू द ग्रोथ मॉडल में भी ये चेंज लेके आने के लिए कोशिश किया है, एंड दिस वाज आल्सो सक्सेसफुल वन बिकॉज द ग्रोथ टारगेट वाज 5.2 एंड अचीव्ड 5.7 ग्रोथ, इसमें लेके आने के लिए they have able to do that. So that is the 6th 5-year plan. Then the 7th 5-year plan, again 5 years, 1985 to 1990. This is under the leadership of Rajiv Gandhi. तो इंदिरा गांधी, we know that इसका तो बीच में इसका assassination हो गया है, and new leader का that is राजीव गांधी आ गया है। So Rajiv Gandhi is also same thought था इसका भी, so he has also followed the 5-year plan. इसी time में the objective of the plan include establishment of self-sufficient economy, almost same है, economic liberalization, economic reliance, self-reliance और self-sufficiency, ये सब same ही है। तो यहाँ पे they have given importance to self-sufficient economy, opportunities for productive employment and upgradation of technology का influence कब से आया है, mainly from the 6th 5-year. So 7th 5-year plan में भी technological upgradation they have aimed for. यहाँ again agriculture productivity के लिए भी वो लोग
ध्यान दिया है, the plan aimed at the acceleration of food grain production, increasing employment opportunity, raising the productivity of food crops. Then work and productivity के लिए they have given the importance. And during this time, private sector got priority over the public sector. That is the main difference. Private sector. तो after 1985 के बाद क्या हो गया है, हमारा इकोनॉमी थोड़ा पीछे जाने का, क्योंकि whole world is changing to globalization, liberalization and privatization. ये तीन concept most of the nations were adopting. So we were also forced to follow this kind of three economic processes. ये तीन process को हम लोगों को भी forcefully we have to follow. तो उसी टाइम में क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है गवर्नमेंट को. दैट्स सो इसका वजह से क्या हो गया है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट उसी टाइम में हो गया है. ग्रोथ टारगेट वाज 5 था, बट क्या हो गया 6% ग्रोथ अचीव किया है वी हैव. तो दैट इज 7th 5-year प्लान. देन द 8th 5-year प्लान. तो 8th 5-year का प्लान के पहले क्या हो गया, एनुअल प्लान्स हो गया है. बिकॉज बहुत कुछ प्रॉब्लम उसके राजीव गांधी के भी ऊपर बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो उसी टाइम में बहुत कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स उसी टाइम में हो गया है. सो क्या हो गया, 5-year प्लान डिसकंटिन्यू हो गया है 1990s के बाद. फिर 2 साल क्या हो गया, एनुअल प्लान्स अगेन फॉलो किया. सो देयर वर 3 ब्रेक्स हो गया. पहले प्लान ब्रेक था, देन we have rolling plan, then annual plans लेके आया है for 1991 and 1922. Economic crisis भी उसी टाइम में बहुत ज्यादा आ गया. Then we have the 8th 5-year plan, that is from 1992 to 1997 under the leadership of P.V. Narasimha Rao government आ गया. So we know the Manmohan Singh government. So Manmohan Singh उसी टाइम में इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी का बहुत बड़ा चेंज मेकर था असली में, बिकॉज वी हैव अडॉप्टेड द ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन कंसेप्ट मेनली ड्यूरिंग दिस टाइम 1993 में अडॉप्ट किया है, बिकॉज वी वर हैविंग दैट मच ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे इधर नहीं था, फॉरेन मनी हमारे इधर बहुत कम हो गया था. Because of this, we have adopted a new economic policy of globalization, liberalization, and privatization. The top priority was given to development of human resources, especially employment, education, and public health. The main economic outcome of the 8th period was rapid economic growth उसी टाइम में हो गया. एनुअल ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट 6.8%, उतना सा बढ़ गया है. देन इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड हो गया है, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया था. भाई साहब बहुत कुछ ग्रोथ इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में ये सब, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट किया, लिबरलाइजेशन ये सब अडॉप्ट किया है. शेयर ऑफ द पब्लिक सेक्टर, द टोटल इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन एंड कंसिडरेबली टू 34%. तो ये सबका क्या है रीजन था, प्राइवेटाइजेशन आ गया तो पब्लिक सेक्टर का ये कम हो गया, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ज्यादा हो गया बिकॉज लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट किया है. सो दैट वेयर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. ये भी 8th 5-year प्लान इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट किया है इसी प्लान के टाइम में. देन द 9th 5-year प्लान. 9th 5-year प्लान इज बिटवीन 1997 to 2002. वी नो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम के साथ, फोकसिंग ऑन ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. दैट वाज द प्लान फोकस. द प्लान वाज एक्चुअली अ फेलियर था. टारगेट 6.5% था, बट अचीव्ड ओनली 5.6%. तो इसी टाइम में वी नो द कारगिल वार ऐसा कुछ हुआ है इसी टाइम में, तो थोड़ा प्रॉब्लम फंड तो उधर भी गया है. तो देयर वाज ए रिडक्शन इन द ग्रोथ. तो 6.5
target था achieved only 5.6%. Then the 10th 5-year plan. So it was between 2002 to 2007 under the leadership. उसी टाइम में थोड़ा सा अटल बिहारी वाजपेयी था. Then बाद में आ गया है द मनमोहन सिंह. इंडिया का एक अच्छा इकोनॉमिस्ट था वो भी. And the plan is to double the per capita income of the Indian in the next 10 years. That was the per capita income से ज्यादा करने के लिए. इसके साथ poverty ratio to be raised to 15%. तो poverty कम करना है, per capita income of the citizen should be increased. ये दोनों था 10 5 years. This was targeted 8% था, but achieved 7.6. So it was not, we can't say it is not successful. It is almost successful था. ये 10th 5-year plan थी. इसका क्या है मेन एम क्या था? Poverty reduction and doubling the per capita income of the citizen of India. Then 11th 5-year plan, which is between 2007 and 2012. We know it is by मनमोहन सिंह गवर्नमेंट का टाइम में था. प्रिपेयर्ड बाय सी रंगराजन ने बनाया है दिस 11th 5-year प्लान. मेन थीम था रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ. बट मेनी सेक्टर्स में ग्रोथ करना है, नॉट ओनली इन एग्रीकल्चर. तो ये सब सेक्टर को इंक्लूड करके इसका होल एरिया को डेवलप करना है. दैट वाज द मेन थीम. And growth achieved 8% and was target was 9%. So this is also one of the successful 5-year plan था, 11th 5-year plan. And the final one is the 12th 5-year plan. 12th 5-year plan ऐसा था. It was started from 2012 and ended in 2017. Started during the time of मनमोहन सिंह and to be continue किया है नरेंद्र मोदी के टाइम में. So that was the 12th 5-year plan. क्योंकि 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुआ है 12th 5-year plan के टाइम में. The main theme is the faster and more inclusive and sustainable growth of the country. Growth rate target था 8.8% था, almost 7.4% ऐसा कुछ डेवलपमेंट करने के लिए ये इसका तो सक्सेस हुआ था. लेकिन क्या हुआ? फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर हैज बीन ए फीलिंग दैट द कंट्री एज ए डाइवर्स एंड एज बिग सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. ये प्रॉब्लम था. सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कुड नॉट बी वर्क. ये वर्क नहीं होगा, इतना बड़ा कंट्री है तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इज नॉट ए गुड वे टू डू प्लानिंग इन आवर कंट्री. ऐसा सोच आ गया था. This was not during the 2014 में नहीं था. Even in 1990 से ये शुरू किया है. That is why we have पंचायती राज. 1993 में 93-94 में पंचायती राज, क्योंकि बॉटम लेवल प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. ऐसा एक सोच आया था. तो क्या किया? 5-year प्लान असली में टॉप टू बॉटम प्लानिंग था. बट वी हैव शिफ्टेड टू बॉटम टू टॉप लेवल प्लानिंग फॉलो करने के लिए वी हैव डिसॉल्व द प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन को निकाल के इंस्टेड क्या किया है? वी हैव रिप्लेस दैट विद नीति आयोग. नीति आयोग को लेके आया है. सो दैट इज द 5-year प्लान्स ऑफ इंडिया. इसमें यू वांट टू रिमेंबर ये सब 5-year ऐड करने से यू विल गेट. तो एनुअल प्लान हो गया 1991-92 में. देन रोलिंग प्लान आ गया 78 टू 1980. तो चेंज है 1980 है, इसमें आ गया है. देन प्लानिंग हॉलीडे 1966 टू 96. तो आपको याद रखने के लिए इजी है. एंड बिटवीन दैट 74 टू 78 वो 4 साल का एक 5th 5-year प्लान इज ओनली फॉर 4 years था. 5-year प्लान कंप्लीट करने के लिए नहीं हो पाया है. तो दैट इज द गैप. ये याद रखने से यू कैन इजिली स्टार्ट 1951, 56, 56 टू 61, 66 टू 66, 66 के बीच में 67, 68, 69 तो एनुअल प्लान हो गया. सॉरी प्लान हॉलीडे हो गया. उसके बाद 69 टू 74,
74 to 78, 5 नहीं हो पाया, 4 ही हुआ था। देन 78 के बाद 3 साल रोलिंग प्लान था। देन 90 से शुरू किया है, सॉरी 80 से शुरू किया है, 80 to 85, 85 to 90, 90 के बाद 2 साल एनुअल प्लान लेके आया है, तो 91, 92 गया। देन 92 to 97, 97 to 2002, then 2002 to 2007, 2007 to 2012, then 2012 to 2017, ये हो गया हमारा 5-year plan. Now we have नीति आयोग, National Institution for Transforming India. That is the, so it was mainly on 1st January cabinet resolution लेके आया है, replacing planning commission. Newly formed National Institution for Transforming India आया है, यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है दिस नीति आयोग। इसका मेन चीज है कि बॉटम अप मॉडल है, बॉटम लेवल से नहीं तो विलेज पंचायत ए लेवल से। सो इसमें क्या है, स्टेट रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है। पहले तो ऐसा नहीं है, स्टेट तो रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था, यहाँ क्या है, स्टेट रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है नीति आयोग में। सब स्टेट से देयर विल बी रिप्रेजेंटेशन, मिनिस्टर्स तो रिप्रेजेंट करता है नीति आयोग के अंदर। सो it has given more opportunity and more voice to the state level planning के लिए। Then it constitute mainly of prime minister, so यहाँ पे chairperson और chairman is the prime minister। वाइस चेयरमैन है इसके साथ अभी का सुमन बेरे है वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। Then ex officio members that include Amit Shah, Rajnath Singh, Nirmala Sitaram, Narendra Singh Tomar, ये तीनों हो गया ex officio permanent members। Then special invitees हो गया नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, वीरेंद्र कुमार, अश्विनी विश्वनाथ, then राव इंद्रजीत सिंह। Then full time members हो गया वीके सारस्वत, फॉर्मर DRDO चीफ है, देन रमेश चंद एक्सपर्ट है, देन डॉक्टर वीके पॉल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है, देन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परमेश्वर अय्यर, देन गवर्नमेंट काउंसिल के ऑल चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द अंडमान एंड निकोबार एंड स्पेशल इन्विटीज, ऐसा हो गया है। तो चीफ मिनिस्टर्स भी एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी इसके साथ आ गया है, अस गवर्निंग काउंसिल के अंदर आ गया है। तो यहाँ क्या है, इंस्टेड ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन इट इज द वाइस चेयरपर्सन, ये चेंज हुआ है। तो इसका तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर भी अभी का नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन है बोलने से सुमन बेरी है अभी का वाइस चेयरपर्सन। देन 5-year plans in India, इसका एक शॉर्ट हम दिया है याद रखने के लिए। तो 51, 56, 56, 61, 61, 66, then 3 annual plan 66 to 69, then 4th 5-year plan 69, 74, 5th 5-year plan 74 to 80 में 78 तक है। उसके बीच में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो 4 year ही है। उसके बाद रोलिंग प्लान हो गया, देन 6th 5-year plan 80, 85, 85, 90, 90 to 97, क्योंकि इसके बीच में एनुअल प्लान आ गया 97 to 2002, 2002 to 2007, 2007 to 12, and 2012 to 17. So that's about the role of planning commission and major aims and objectives of the 5-year plans. इसमें फर्स्ट 5-year प्लान याद रखना है मेनली, देन द 8th 5-year प्लान हम बोला है 92 to 97 का, वेयर वी हैव अडॉप्टेड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट किया है नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम में, वो याद रखना है। एंड अभी का लेटेस्ट वन लास्ट 5-year प्लान कौन सी टाइम में है, 2012 to 2017, ऐसा कुछ चीज
याद रखना है, ये इसमें से पूछने का चांस है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 to 56 and the planning commission was constituted during 1950। ये सब याद रखना है। ओके, इसमें कुछ डाउट है? सर हाँ, ये जो ना 2014 में 5 ईयर प्लान खत्म हो गया था ना। प्लान खत्म नहीं हुआ है, प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया है। प्लान 2012 से 17 तक कंटिन्यू किया है, उसके बाद खत्म कर दिया है। ओ 2000 उसके बाद ना, तो नीति आयोग जो 2015 से लागू हो गया था। हाँ, लागू हो गया था। तो दोनों चल रहा था 2015 से 2017 3 साल। नहीं नहीं, तब ये कंट्रोल ना नीति आयोग के ऊपर आ गया है 5 ईयर प्लान का। तो अभी नीति 5 ईयर प्लान कब खत्म हुआ बोले तो हम लोग 2014 बोलेगा ना 17। ओके। प्लानिंग कमीशन एंड हो गया है 2014 में, 5 ईयर प्लान खत्म हो गया है 2017 में। ओके ओके देन। थैंक यू सर।